Starting with November 2021, paper 4-1. Walaikum assalam, Mustafa. So this is the paper that we are starting with. November 2021, paper 4-1. Okay. Now this is not, we're not going to do the complete paper. We will just be doing some specific questions from this as decided earlier. So these are some instructions. We have seen them before. Working आपने show करनी है पूरी सारी आपके working में जो accuracy होगी, that should be at least four significant figures. And then the value of G that you use, that should be 10 in this mechanics paper. Okay, let's start with this. So the first question was relatively easier. Second as well, third as well, fourth, fifth, sixth. Is paper mein se, I'm going to be doing the last two questions. Okay, these are relatively more difficult. Question number 6 and question number 7. These are the ones that we're going to look at. The first 5 questions are relatively easier. We are not doing them. Okay. Okay, let's start with this. Walaikum assalam Farzan. So there's a particle P that moves in a straight line, starting from a point O and comes to rest 14 seconds later. So this is question number 6. We have a particle P that's moving in a straight line, starting from a point O, and it comes to rest 14 seconds later. So this is an important piece of information. 14 seconds के बाद उसकी speed क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. Okay. At time t seconds after leaving O, the velocity is given by these two equations. Now we've got two equations that represent the journey. One equation is for time between 0 and 6, and the other is for time between 0 and 6 and 14. Okay. Where P and Q are positive constants, we're given that the acceleration of P is 0 when t equals 2. So that's another piece of information that we're given. Acceleration is 0 when time equals 2. Given that there's no instantaneous change in velocity, find P and Q. Okay, now what does this statement mean? Instantaneously, आपकी velocity एकदम change नहीं हो रही. इसका मतलब यहाँ पे ये होता है, when you're given two different equations, कि अब जब आप एक equation से दूसरी equation पे switch करते हो, यानी time equals 6 के ऊपर दोनों equation से आपके पास same velocity आ रही होगी time equals 6 के ऊपर, right? 6 is the point when you are switching from one equation to the other. उस point के ऊपर दोनों equation आपको same velocity दे रहे होंगे. Yes, Fazan, that's correct. So what we do is we've got two equations. One is V equals PT square minus QT. And the other is V equals 63 minus 4.5t. Now at time t equals 6, they should be giving the same velocity. That's what this means, that there are no instantaneous change in velocity. 6 point के ऊपर दोनों equal हैं. ठीक है? अच्छा. अब 6 time की values में input कर दें and see what velocity you get. You get P into 6 square minus Q into 6, and that gives you 36P minus 6Q. What about the other one? This gives us 63 minus 4.5 into 6. You evaluate this and see what this gives us. This gives us V equals 63 minus 27, which should be 36. दो equations आ गई. अब इन दोनों की values equal होनी चाहिए, क्योंकि हमने कहा है first equation से भी उस पे same velocity आनी चाहिए, second से भी same आनी चाहिए. So we equate them. So we have 36P minus 6Q equals 36. So you've got one equation in P and Q, but that's not enough. P और Q दो आपके पास unknowns है, एक equation से दोनों की values नहीं निकाल सकते. So we need some other relationship as well. So now we look at another piece of information that we're given. We are given that the acceleration of P is 0 when time equals 2. So एक और उसने आपको piece of information दिया हुआ है कि acceleration की value 0 है at t equals 2. Velocity equation दी हुई है, right? दोनों equation दी हुई हैं. Velocity से acceleration पे कैसे जाते हैं? We differentiate. Okay? Velocity से acceleration पे जाने के लिए we differentiate. But time equals 2 here.
So तो कौन सी इक्वेशन रेलेवेंट है यहाँ पे? The first equation that's relevant because time equals to first वाले के डोमेन के अंदर आ रहा है. So that's the equation that we use here. We say v equals pt square minus qt. हम इससे acceleration निकाल लेते हैं. How do you do that? You differentiate it. pt square का derivative, it's going to be 2pt minus q. That's the derivative of qt. ये आपके पास acceleration आ गई. And now what we do is we say when acceleration is 0, when time equals 2, acceleration is 0. तो a की value 0 input कर दें, time की value 2 input कर दें. What do you get from this? 2p into 2 minus q. You get another equation. That's 4p minus q equals 0. And these two equations are now going to give you the values of p and q. इनको simultaneously solve कर लें, you get the values of p and q. ठीक है? अब for इस equation से हम बेशक q निकाल लें. q equals 4p. You can go and input this in the other equation. ये जाके उसमें input कर दें. q की जगह पे 4p डाल दिया. 36p minus 6 into 4p equals 36. And that's 36 minus 24, which is 12p. 12p equals 36. p equals 3 from that. p equals 3 आ गया तो q की value क्या हो जाएगी? That's going to be 4 times p. That's 4 into 3. That turns out to be 12. q equals 12 and p equals 3. ये दोनों values आपको figure out करनी थी यहाँ पे. ठीक है? That's this first part. Okay. Now the second part says you have to sketch the velocity time graph for this journey. Velocity time graph बनाने कहाँ से कहाँ तक? 0 time कहाँ से move कर रहा है? 0 से लेकर 14 तक. Now you've got to sketch this graph. So it doesn't have to be extremely accurate, but important points should be clearly shown. और आपकी जो shape है graph की वो सही होनी चाहिए. ठीक है? अब इसका क्या तरीका आएगा? You've got the functions. आपको पता है एक quadratic function है. The first one here is the quadratic function. उसमें आपने quadratic curve बनानी है. The second is a straight line. उसमें आप straight line बना दोगे. ठीक है? Now let me write down those equations here. First equation क्या है? Now that we have the values of p and q, p is 3. The first equation is going to be 3t square minus 12 times t. Okay, this is the equation that is valid for time between 0 and 6. Then we have the second equation, and that is 63 minus 4.5t, 63 minus 4.5 times t. These are the intervals for which they are valid. Okay, now let's sketch this graph. हम यहाँ पे क्या करते हैं? Axes बना लेते हैं दो. Now time तो negative नहीं होगा, तो negative side पे तो हमें नहीं चाहिए. I'm going to erase that. Let's try to make a graph here now. Okay. Now this is the velocity axis. Vertical axis पे velocity होगी. यहाँ पे time होगा. Time कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? It's going from 0 to 14. दरम्यान में कहीं पे 6 है. वो point भी mark कर लें. Let's say this is 6. अच्छा अब देखिए 0 से 6 तक it's supposed to be a quadratic. It's supposed to be a quadratic curve, right? Yes, Fazan, that's a very good idea. आपके पास सबसे पहले ये quadratic curve है. Quadratic curve इसकी shape क्या है? अगर ये पूरी curve होती, पूरी curve की shape किस तरह होती? It was supposed to be a U-shaped curve, right? U-shaped curve होती. अगर हम ये पूरी curve बनाते हैं negative side पे positive side पे भी, this is what the shape would have been. लेकिन अब हमें नहीं पता ये जो 0 से 6 वाला पार्ट आ रहा है इसमें इसका कौन सा पार्ट आ रहा है, राइट? इसमें से कौन सा पार्ट आ रहा है? वी डोंट नो अबाउट दैट. सो व्हाट वी डू हियर इज क्वाड्रेटिक कर्व के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप फिगर आउट कर लें. कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? इसके एक्स इंटरसेप्ट्स दे आर प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड बिकॉज ये इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं है. इसको फैक्टराइज आप सिंपली कर सकते हो. लेट्स एक्चुअली फैक्टराइज दिस वेरी क्विकली. दिस इज गोइंग टू बी 3t into t minus 4. अगर इसके रूट्स निकालें आप यानी इसके x इंटरसेप्ट्स
वो क्या आ जाएंगे, they're going to be t equals 0 and t equals 4. यानी कि एक दफा वो x एक्सिस को कट करेगी इस पॉइंट के ऊपर, तो स्टार्ट जो है वो 0 से हो रहा है, and then it's going to cut the x axis again at this point, that is 4. Now that's important now, because इसका मतलब ये हुआ कि ये कर्व यहाँ से, now we know the overall shape, ये आपकी overall shape है, तो अब ये शेप, अब इसको क्या हो रहा होगा, इस ग्राफ को, it's going to be going down here and then it's going to come up here and go like this. Like that's what the graph is going to look like roughly. Okay, let me draw it again so you don't have to go very far up there. This is what the graph is going to look like roughly. ठीक है, आप रूट्स फाइंड करके आपको पता चल गया कि इन दो पॉइंट्स पे इसने एक्स एक्सिस को कट करना है, और आपको शेप भी पता है ओवरऑल, उसको यूज करके आपने ये शेप बना दी. ठीक है, ओके. नाउ इट्स नॉट इम्पोर्टेंट in these situations to necessarily show this minimum point. ये जरूरी नहीं होता इसको शो करना, but it's pretty obvious. आप इसको बना भी सकते हो क्योंकि आपको पता है 0 और 4 एक्स इंटरसेप्ट है, मिनिमम पॉइंट बिल्कुल इनके सेंटर में होएगा, यानी कि 2 के ऊपर होएगा. 2 आप इसमें इनपुट कर दें और देखें आपके पास क्या वैल्यू आती है. राइट, 3 into 4 that's 12, 12 minus 24 that's going to be minus 12. तो 2 के ऊपर vertical axis के ऊपर it's actually going to be minus 12, negative 12 यहाँ पे वैल्यू आ रही होगी. ठीक है, if you want you can mark that, but this is not necessary. उसने इसका पूछा नहीं. ठीक है, अच्छा ये आपकी शेप बन गई क्वाड्रेटिक. अब आपको देखना है लीनियर पार्ट, जो ये दूसरे वाले ग्राफ है, that's going to be pretty straightforward. स्ट्रेट लाइन के लिए आपको सिर्फ दो चीजें चाहिए होती हैं. You just need a point. You just need 2 points, right? आपने बस 2 points वहां पे प्लॉट कर देने हैं and that's going to be enough. अब कौन से पॉइंट्स ले लें? 6 पे वैल्यू देख लें उसकी. 6 इसके अंदर इनपुट करें, देखें क्या आता है. t की वैल्यू 6 इनपुट करें, what do we get? We get 36, right? ये हमने ऊपर फर्स्ट पार्ट में वैसे भी फाइंड किया था, यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे 6 इनपुट किया था, तो हमारे पास क्या आ रहा था? 36 आ रहा था. ठीक है, so ये वैल्यू जो है हमारे पास, this is 36. So we got another point here for velocity. ठीक है, ये पॉइंट आ गया. अब 14 पे चेक कर लें. 14 पे वैल्यू चेक कर लें इसकी क्या आती है. तो हम क्या करेंगे, t की वैल्यू 14 इनपुट कर देंगे उसके ऊपर. उस पर क्या आता है? v 63 minus 4.5 into 14, that turns out to be 0. और आपको इनफैक्ट पता है, आपको फाइंड करने की जरूरत भी नहीं थी, उसने आपको बताया हुआ था ऊपर. It came to rest 14 seconds later. इसका मतलब 14 seconds पे आपको उसने ऑलरेडी बताया हुआ है कि पॉइंट 0 है, तो आपको ये कैलकुलेट करना भी नहीं पड़ना था वैसे. और अगर आप कर भी लें तो आपके पास 0 आता है. So it's going to go like this, straight line from this point to this point. This is how your graph is going to look like. ठीक है, ये आपका ग्राफ होगा. ठीक है, let's move on. Now it says find the total distance traveled by P during the 14 seconds. Total distance find करना है. We're not talking about displacement. We're talking about the distance traveled. अब जब भी distance travel आपने find करना है, आप इसको इकट्ठा नहीं कर सकते. उसकी वजह ये है, आप ग्राफ पे भी आप देखें, आपको नजर आ रहा है, अगर आप डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट वाला फंक्शन निकाल के उस पर लिमिट्स डाल देंगे, लेट्स से 0 से 6 एक फंक्शन में, फिर 6 से 14 दूसरे फंक्शन में, उससे होगा क्या? ये पार्ट नेगेटिव होगा, ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव होएगा, तो वो कुछ कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो वो डिस्प्लेसमेंट तो आपको मिल जाएगी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इस तरह से नहीं मिलेगा. डिस्टेंस ट्रैवल्ड के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको इस जर्नी को ब्रेक करना पड़ता है उन पॉइंट्स के ऊपर जहां पे आपका ऑब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज कर रहा है. देखिए 0 से लेकर 4 seconds तक the direction of the particle is in one direction. The particle is going in one direction. और जो दूसरा आपके पास पोर्शन है फ्रॉम 4 to 6, उसमें पार्टिकल दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है. इस पॉइंट पे आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा. तो आप 0 से 4 तक फाइंड करोगे पहले, फिर आप 4 से 6 तक फाइंड करोगे, उनको सेपरेटली इस तरह ऐड करोगे. राइट? Yes, Fazan, we're going to integrate it. That's how we are going to find this area, right? So आपको उससे भी पता है P1 इंटीग्रेशन से कि एरिया अंडर द ग्राफ आप कैसे फाइंड करते होते हो.
You find that using integration. So that's what we're going to do here. और आप मैकेनिक्स में भी हमें पता है कि वेलोसिटी से हम डिस्प्लेसमेंट पे कैसे जाते हैं. वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट बचाने के लिए वी हैव टू इंटीग्रेट. नाउ हाउ डू वी डू दैट? दो फंक्शंस है ऊपर, वो लिख लेते हैं. दो फंक्शंस हमारे पास कौन से थे, मैंने यहाँ पे नीचे भी लिखे हैं. सो वी हैव v equals 3t square minus 12t. That's one function. v equals 3t square minus 12t. This was valid for time between 0 and 6. The other function is valid for time between 6 and 14, and that is 63 minus 4.5t. This is the other function. Now, first of all, we have to find the displacement functions for both of them. Displacement function कैसे आएगा? हम इन दोनों को integrate कर देते हैं. इन दोनों को integrate कर देते हैं. What do we get from that? We get 3t cube over 3 minus 12t square over 2. Generally, whenever we integrate, we have to put plus c there. लेकिन यहाँ पे हम limits use करके कर लेते हैं. That's going to be easier. तो limits हम लेकिन किस तरह से डालेंगे? हम इसको दो parts में divide कर लेंगे. Let me just first write down the integral. मैं यहाँ पे plus c ignore कर रहा हूँ. क्यों? क्योंकि मैंने limits input करनी है. The displacement function that I end up with is this t cube minus 6t square. Plus c मैं यहाँ पे नहीं डालूंगा जब limits input करूंगा. I've got two parts to this. एक part में I'm going to go from 0 to 4, और दूसरे part में I'm going to find the displacement when it goes from 4 to 6. Why am I doing this? Because time equals 4 के ऊपर particle अपनी direction change कर रहा है. इस point पे आपको break करना होता है, क्योंकि एक part में negative displacement आएगी, एक में positive आएगी. क्योंकि आपको distance चाहिए, you will make both of them positive and then add them. Okay. Now let's figure both of these out. First वाले में 0 से 4 limits input कर दें. t cube minus 6t square. Input the limits from 0 to 4 and see what you get from that. 4 cube minus 6 into 4 squared. ये आपने 4 input किया तो ये आ गया. 0 input करने पे तो 0 आ जाएगा. And you can see what you get from this. 64 minus 16 into 4, that is, minus 16 into 6, that's minus 32. First part में मेरे पास आ रहा है minus 32. ठीक है, अब ये एक डायरेक्शन में पार्टिकल गया है, लेट्स से लेफ्ट साइड पे गया. उसके बाद t equals 4 से लेकर t equals 6 तक क्या हो रहा है? Let's input those limits now. This was S1, this is S2. Second part में क्या होगा? 4 से 6 input करेंगे. Again, the function is still the same. t cube minus 6t square. इस part में देखते हैं क्या होता है इस particle को. So we have 6 cube minus 6 into 6 squared minus 4 cube minus 6 into 4 squared. Let's evaluate this. First bracket turns out to be 0. The second bracket turns out to be minus 32. And this is plus 32. ये मेरे पास 32 आ गया for the second part. तो basically हो ये रहा है, if I were to show you कि किस तरह से move कर रहे हैं, इसने start कहाँ से किया था? इसने O से start किया था ना? So basically first 4 seconds में वो एक side पे जा रहे हैं, 32 units. उसके बाद, so this is happening in 4 seconds. ये time equals 4 पे यहाँ पे पहुँच गया. And then in the next 2 seconds, time equals 6 पे, it has gone back to its original position. यहाँ पे पहुँच गया. उसके बाद अब थर्ड पार्ट में वो यहाँ से राइट साइड मूव करना शुरू करता है. ठीक है, ये दो पार्ट्स हमने कर लिए. अब थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या हो रहा है. थर्ड पार्ट इज फ्रॉम 6 to 14. इफ यू वांट यू कैन जस्ट यूज द ग्राफ फॉर दिस. आप ये ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लें, वो भी कर सकते हैं, या फिर हम जिस तरह इंटीग्रेशन कर रहे हैं दूसरे फंक्शन को भी इंटीग्रेट कर देते हैं जस्ट टू बी कंसिस्टेंट. इसको इंटीग्रेट करें और इसमें लिमिट्स इनपुट कर दें. कहाँ से कहाँ तक? 6 से लेकर 14 तक. 6 से लेकर 14 तक तो आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, उसको हम इकट्ठा कर सकते हैं. ठीक है, so this is going to be 63t minus 4.5t square over 2, and now we input the limits from 6 to 14 in this function and see what that gives us. एक दफा 14 input कर दें. 63
into 14 minus 4.5 14 squared divided by 2. ये आपने लिमिट्स इनपुट करके दिखानी है. Do not write the final answer after the step. लिमिट्स इनपुट करके दिखानी है, उसके बाद आप आंसर लिख सकते हैं. लिमिट्स लेकिन इनपुट करना स्किप नहीं करना बिल्कुल. That will make you lose marks for no reason. So don't do that. लिमिट्स इनपुट करके दिखानी है, उसके बाद आप कर सकते हैं if you want from your calculator directly. 63 into 6 minus 4.5 into 6 squared divided by 2. Let's evaluate this. एक ब्रैकेट अलग अलग कर लें. It's going to be simpler. ये देखिए आपके पास क्या आता है. 63 times 14 minus 4.5 into 14 squared divided by 2. That's the first bracket that I have. I'm getting 441 here. Please confirm if that's correct. In the second bracket, I have 63 into 6 minus 4.5 into 36 divided by 2, and that's 297. And that's giving me 144. ये मेरे पास third displacement आ गई. अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों को add कर दूँगा. And that's going to give me the total distance traveled. Making sure कि ये जो negative part है, इसको positive कर दें because distance तो positive ही होता है, right? So what's the total distance traveled? That's 32 plus 32 plus 144, and that's going to give you something 208 meters. That's the distance. ये आपके पास total distance आ गया. Okay? Does that make sense? That was question number 6. Let's move on to question number 7 now. Yeah, so this is the overall solution to the C part. All right, let's move on to question number 7. There are two particles, A and B, of masses 2 kilograms and 3 kilograms respectively, which are connected by a light and extensible string. Particle B is in a smooth fixed plane, which is at an angle 18 degrees to the horizontal. The string passes over a fixed smooth pulley. Achha, so let's highlight the important points so we don't forget them. A और B के masses हैं 2 kilograms and 3 kilograms. आपको diagram पे in fact नजर आ रहा है, so that's not that important. They're connected by a light string. Particle B is on a smooth plane. So this is important. B smooth plane के ऊपर है, there's no friction. Okay, there's no friction. Angle 18 है plane का, वो भी आपको नजर आ रहा है वहाँ पे. It passes over a smooth pulley at the top of the plane. Particle A hangs vertically below the pulley and is 0.45 meters above the ground. That's given in the figure as well. The system is released from rest with the string taut. When A reaches the ground, the string breaks. Okay. Find the total distance traveled by B before coming to instantaneous rest. You may assume that B does not reach the pulley. अच्छा, now let's try to understand first कि उसने पूछा क्या है. पहले तो क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, ओके अच्छा आपको वैसे उसने बता दिया, डायरेक्टली उसने बता दिया. उसने क्या है, A reaches the ground, so basically हो क्या रहा है, A नीचे मूव करेगा और B इस साइड पे मूव कर रहा है. That's the movement that's happening. Now after 0.45 meters, A is going to hit the ground. अब B भी किसी पॉइंट पे पहुंच गया होगा इधर. That may be 0.45 meters from its original point. जब A यहाँ पे ग्राउंड पे पहुंचेगा, B इस पॉइंट पे पहुंच चुका होगा, right? Now B will have some velocity and it's going to continue after that, even though the string will break at that point. तो ये टेंशन ऊपर वाली खत्म हो जाएगी, लेकिन क्योंकि उसकी अभी कुछ वेलोसिटी होगी, उसकी वजह से वो थोड़ा सा ऊपर और मूव करता जाएगा. But at some point, because of its weight, it's going to stop, रेस्ट पे आएगा और वापस मूव करना शुरू कर देगा फिर. तो जिस पॉइंट पे जाके वो इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे आता है, उसकी वेलोसिटी 0 होती है, उस पॉइंट तक हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है. अब ये पहला वाला डिस्टेंस हमें पता है 0.45 मीटर्स. तो बेसिकली स्ट्रिंग ब्रेक होने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो हमें फिगर आउट करना है. ओके,
Now, let's try to figure this out. It's an 8-part question, so it's going to require some working. Now, there are 2 parts of this journey. Okay? Now, what are those 2 parts? First of all, B and A are connected with the string, and there's going to be tension in that string, right? Let's start with this current situation and think about the forces that are applying on both of them. दोनों के ऊपर क्या-क्या forces लग रही हैं? B के ऊपर कौन सी forces लग रही हैं? We've got the weight of B that's acting vertically downwards, which is going to be 30 Newton. There's going to be normal reaction that's acting in this direction. We don't really need that here. Why? Because friction नहीं है यहाँ पे, तो हमें R तो नहीं चाहिए. Okay. Yes, Fazan, that's correct. So we don't really care about normal, but that's one force that is acting here. What about this force that the string is applying? This tension acting in this direction. And there's going to be, yeah, so that's all the forces that are applying on this particle B. But then we have to resolve this weight that is acting vertically downwards because it's acting at an angle to the plane. इसको हमें resolve करना पड़ेगा. Weight को resolve कर लेते हैं along the plane and perpendicular to the plane. Now, you can just remember that along the plane, weight का component हमेशा क्या होता है? It's going to be mg sine theta. Theta where theta represents angle of the plane. Angle of plane with the horizontal. अगर आपको पता हो, तो weight का component along the plane is always going to be mg sine theta. Okay, so many people just remember it like that. It's quicker. Otherwise, what's the logic behind that? If this is 18, ये angle कितना है? This is 72. If this is 72, this angle is again going to be 18. तो ये angle 18 आ गया. अब इस 18 के हिसाब से हम देख लें आपके components क्या बनते हैं. Weight का component जो left side पे लग रहा होगा, that's going to be 30 sine 18. It's the component that's on the other side of the angle. वहाँ पे sine लगाते हैं. और ये साथ वाले angle के साथ वाला component होगा. We will have cos there, 30 cos 18. अब we don't really care about the perpendicular forces. हमें सिर्फ plane के parallel forces चाहिए. एक tension है, एक 30 sine 18 है, and that's it. These are the only 2 forces that are acting on the particle B. ये B के ऊपर सारी forces होगी. Now, what about particle A? A has its weight acting downwards. That's going to be 20 Newton, and it has a tension that's acting upwards. These are the only 2 forces that are acting on A. Now what we can do is we can make 2 equations. We can make 2 equations, Newton's second law को use करके, and we can find acceleration of both of these particles. ठीक है? Let's do it step by step for both of those particles. एक दफा हम B को देख लेते हैं. Yeah, let's write A here first, and then we have B. Since the movement for A is downwards, तो हम RF equals ma यहाँ पे apply करेंगे, resultant force equals mass into acceleration. The forward force for A is going to be downwards, which is 20 Newton. 20 में से minus कर दें backward force, which is T, that's the tension. That equals mass of A, that's 2 into acceleration. एक equation आ गई. What about B? Particle B में क्योंकि movement right side पे हो रही है, the forward force is this tension. We have tension minus 30 sine 18, and that is equal to mass of B, which is 3 times acceleration. You'll solve these 2 equations. इससे आपको A की value मिल जाएगी, acceleration मिल जाएगी particles की. ठीक है? Let's do this quickly. इनको हम क्या कर सकते हैं? इनको हम इस तरह से कर सकते हैं. Add कर लें दोनों equations को. 20 minus T, that equals 2A, and the second equation is T minus 30 sine 18. 30 sine 18 को evaluate कर लें. Make sure your calculator is in degrees mode. Mechanics के पूरे paper में आपने इसको degree mode में रखना. 9.27. That's what I'm getting, but I should be more accurate there. 9.271. Or I can say 9.2705. That's the value that I'm getting for 30 sine 18. That equals 3A. Now, one way to do this is
I can add these two equations. दोनों को add कर देंगे तो क्या होएगा? T cancel out हो जाएगा. 20 minus 9.2705. What's that? That's going to be 10.73 equals 5a, and that's going to give us some acceleration. Acceleration क्या आ जाती है यहाँ से? 10.73 divided by 5, that is 2.146. 2.146. This is the acceleration of the particles at what point? Initially, before the string has broken. ठीक है, अभी current situation के अंदर ये acceleration है जिसके ऊपर ये move कर रहे हैं. Now, what do we do after this? Acceleration तो आ गई, अभी current motion के अंदर we know the distance that B is going to travel before the string breaks. कितना distance travel करना है? Distance travel करना है 0.45 meters. You can just write that down here. Particle B को देखें. Before string breaks, उसकी बात करें. What do we know? We know the initial speed. They were released from rest. Both particles were released from rest, right? इसने यहाँ पे दिया हुआ कहीं पे. Yeah, so the system is released from rest. So the starting velocity, the initial velocity is 0. The distance that it's going to travel is 0.45 meters. And now we also know the acceleration. That's going to be 2.146. ठीक है? इसका use करके आप क्या कर सकते हो? You can find the velocity that the particle B has at this point when it has traveled 0.45 meters. Why do we need that? We need that because इस point पे जब velocity आएगी, फिर हम next part के लिए उसको as an initial velocity treat कर सकते हैं और फिर further distance जो travel करना है उसने वो find कर सकते हैं. ठीक है? So we need this velocity at this point. Let's call this point something. इस point को हम कह देते हैं x. इस point x पे जब वो पहुंचता है तब उसकी velocity क्या है? ये हमें figure out करनी है. Now, what equation can we use here? We have the initial velocity u, s और a है. Final velocity find करनी है, v find करना है. We can use v square minus u square plus 2as equals 2as. So let's use that. V square minus u square equals 2as. V आपको find करना है. Well, u square is 0. 2 into 2.146 into 0.45. Let's evaluate this. यहाँ से आपके पास v की value आ जाएगी. 2 into 2.146 into 0.45, and I'm getting 1.9314. If I take square root of that, it gives me 1.3897. That's the velocity that I'm getting at this point. At the point x, at the time the string breaks. ये उस point पे आपकी velocity आ गई. ठीक है? अब हमें यहाँ पे इस point के पे velocity पता चल गई है. Now, once we know this velocity, अब हम इसके आगे वाले journey को देख सकते हैं. अब उससे आगे वाली journey में क्या है? उसकी बात करते हैं. After the string breaks, what happens then? What do we know about that part? After the string breaks, we know the initial velocity for that time, for that part now. अब ये वाली जो final velocity पहले part के अंदर थी, वो next part के लिए initial velocity हो जाएगी. That's going to be 1.3897. उस part के लिए initial velocity पे. ठीक है? What else do we know? We know the final velocity. हमें कहाँ तक time find करना है? कहाँ तक distance find करना है? When B comes to instantaneous rest. So we know the final velocity as well. दो चीजें हैं हमारे पास. We don't know the distance traveled. We don't know the time taken. We don't know the acceleration. ठीक है? हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं. Now, how can we find the acceleration for the next part? अब next part में देखें जब particle यहाँ पे आ जाएगा आगे, कौन सी forces act कर रही होंगी particle B के ऊपर? Let's say the particle is here somewhere. कौन सी forces act कर रही हैं? Is there any tension? There is no tension anymore because string तो break हो गई है. Tension तो है ही नहीं. अब कौन सी force act कर रही है? There's only backward force, and that is this component, that is 30 sin 80. तो acceleration इस part में आपकी क्या हो जाएगी? आप दोबारा से यहाँ पे क्या कर सकते हो? You can use RF equals ma, resultant force equals mass into acceleration.
What's the forward force now? There's no tension, so there's no forward force. That's 0. What's the backward force? Backward force is still there. 30 sine 18. जो आपका weight का component है back side पे जो act कर रहा है, that's still acting. That's 30 sine 18. Mass was 3 kilograms for this object, and that into acceleration. And now this is going to give you some value for acceleration. You can see what that turns out to be. 10 sine 18. ये मेरे पास acceleration की value आ रही है, which is 3.090, and it's negative. So there's deceleration, right? Because क्योंकि सिर्फ backward force लग रही है, forward force तो कोई है ही नहीं. So it's deceleration. Particle आपका slow down हो रहा है. ठीक है? You got this. Now once you got this acceleration value, अब आप क्या कर सकते हो? इस वैल्यू को जाके वहां पे इनपुट कर दो. So now you've got acceleration as well, that is minus 3.090. You got 3 things. अब यहाँ पे आपको क्या करना है? X के बाद distance traveled find करना है. इस पॉइंट से आगे उसने और कितना distance travel किया, ये हमें figure out करना है. Now how much distance has it traveled after this? Which equation can we use for this? Again, we can use 2as equals v square minus u square here. वो equation दोबारा use कर लेते हैं. 2as equals v square minus u square. We know acceleration now, that's minus 3.090. We know the final velocity, that's 0. We know the initial velocity, that's 1.3897. And we square that. We've got s here as well. यहाँ से हमारे पास s की value आ जाएगी minus 1.3897 का square. Remember, this minus is outside the square. इसको positive नहीं बना देना, ये square के बाहर है. Divided by 2 into 3.090. I'm getting 0.3125 for this. So basically, X को ये जो string break होने के बाद उसने कितना distance travel किया है? उसने distance travel किया है 0.3125 meters. This is the distance traveled after the string breaks. Okay. Now, once you got this, now we can find the total distance traveled. उसने कहा था total distance traveled by B before coming to instantaneous stress. What's going to be the total distance now? पहले 0.45 किया, 4.45 में ये add कर दें, you'll get the total final result. So the total distance traveled is going to be 0.45 plus 0.3125. You add the two, and you get the final result. ठीक है, उसने कोई instruction दी हुई है, accuracy की नहीं दी हुई. You can just write down the final result as it is and see what that is. 0.45 plus this, ये क्या आता है? $0.7625. That's what I'm getting. 0.7625. अब उसको as it is लिख सकते हो. If you want to round it up, you can do that. But you can just leave it like this as well. That's the total distance traveled. Okay? ये आपको find करना. So this was question number 7 from this paper. So not very difficult. It was okay. Especially if you compare with the questions that we did from the variant 2 the other day. That was a 5-mark question. This time बहुत time लग गया था. But this one, it was an 8-mark question. Actually, it wasn't that difficult or long. Okay, so that completes our paper 4 variant 1. इसके जो questions हमने करने थे, ये हमने कर लिया. Let's move on to the next one. Okay. This is November 21, paper 4, variant 3 now. So we'll do a couple of questions from this. So again, I've marked a few from this paper. Let's have a look at them. Question number 1 is relatively easier. 2 भी इतना मुश्किल नहीं है. Let's do 3. Question number 3 से start करते हैं. It's also not very difficult. It's okay. But let's do this.
Taha, unfortunately, I'm already very short in time at the moment. We are trying to do as many of these papers as we can. So S2 को इसमें incorporate करना is going to be quite slightly tricky. Maybe next year I could do it, but of course it's not going to be helpful for you. But what I can do is I can recommend you another channel. Do you know about? I'm not sure where you're from, but there's a teacher in Karachi by the name of 𝗣𝗀𝗍𝗶𝗶. So I know him from my time at LAMS. He was in the same batch as me. I'll write down his name here. You'll find some S2 papers on his channel. He's also a very good teacher. You'll find some good stuff on his channel. 𝗣𝗀𝗍𝗶𝗶 ke naam se, I think. You can search for that and find some S2 papers there. Okay, that should be helpful. Acha, let's move on. Question number 3 of this paper. Let's start with this. This is relatively easier. A ball of mass 1.6 kilograms is released from rest at a 0.5 meters above horizontal ground. When the ball hits the ground, it instantaneously loses 8 joules of kinetic energy and starts to move upwards. Okay, so there's a ball that has a mass equal to this. 5 meters above इसको release किया. We can just draw a rough figure to try to understand it better. Ground से ऊपर 5 meters के level पे आपने इसको drop किया. Okay. Now, when the ball hits the ground, it instantaneously loses 8 joules of kinetic energy and starts to move upwards. So उसने ground को आके hit किया नीचे. So it's going like this. It hits the ground and it loses some energy. And then it starts to move upwards. It says use an energy method to find the greatest height that the ball reaches after it hits the ground. ठीक है? अब आप क्या कर सकते हैं? आपको पता है कि उसकी initial energy कितनी होगी? 5 meters is the height that it has, right? You have the mass of the object. You've got the mass of the object. Mass कितना है? Mass of the object is 1.6. And you have gravity. आप क्या कर सकते हो? आप उसकी initial potential energy find कर सकते हो from this point. Let's actually call this point something. इसको A कह देते हैं, इसको B कह देते हैं ground को. Now at A, you've got potential energy of the particle. ठीक है? Potential energy इसकी क्या होगी? It's going to be 1.6 into gravity into height. And that's going to be 80 joules. That's the potential energy that the particle has at the top. Okay? Now, what happens when the particle moves down? When the particle moves down, its potential energy converts to kinetic energy, right? Its potential energy converts to kinetic energy. और वो नीचे जब पॉइंट बी पे पहुंचता है पूरी की पूरी आपकी ग्राउंड पहुंच के उसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है, ग्राउंड पे पहुंच के. Now let me actually try something on my calculator just to verify something. Might not actually need that kinetic energy. This is 72 divided by 1.6 divided by height नहीं है हमारे पास, वापस आता है. Yeah, we can find the height using that if we have the mass. Yeah, so we can actually do it directly. हमें वो करने की जरूरत नहीं है. So basically हो क्या रहा है? Since there is no external force, remember work energy principle में क्या क्या आपके पास आ रहा होता था? Work done by driving force. There's no driving force here. Work done against resistance. There's no resistance here. कोई रेजिस्टेंस का नहीं बताया आपको. सो बेसिकली एनर्जी आपकी कंजर्व हो रही है. अब ऊपर सबसे टॉप पे उसकी एनर्जी कितनी थी? 80 जूल्स. जब नीचे ग्राउंड पे पहुंचे गया तब भी वो 80 जूल्स होगी, ऑल्दो वो सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. लेकिन ग्राउंड पे आके क्या होगा? उसकी एनर्जी 8 जूल्स कम हो गई बिफोर इट वेंट बैक. सब उसने वापस जब जाना शुरू किया अपवर्ड्स तो उसकी एनर्जी अब कितनी होगी ऊपर जाते हुए?
it's going to be 72 joules. तो 72 joules जब वो ऊपर जाएगा, 72 joules एनर्जी के साथ जब ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे कहाँ पहुंचेगा? मैक्सिमम हाइट पे जाके उसकी पोटेंशियल एनर्जी फिर से दोबारा से कितनी होगी? इट्स गोइंग टू बी 72 जूल्स। तो आप 72 जूल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट निकालिए, राइट? तो इसमें आपको कोई वो स्पीड की कैलकुलेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनर्जी कंजर्व हो रही है ना। तो अभी इनिशियली 80 जूल्स थी एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, जब उसने 8 जूल्स लूज कर दिया ग्राउंड पे जाके, बाद में उसकी एनर्जी कितनी रहेगी? 72 जूल्स। तो 72 जूल्स पे उसके हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? दैट्स गोइंग टू बी 72 जूल्स। लेट्स कॉल दैट पॉइंट सी। जब वो वापस ग्राउंड पे होके वापस आता है, उस पॉइंट सी के ऊपर उसकी एनर्जी कितनी है? दैट्स गोइंग टू बी 72। अब मास कितना है उसका? 1.6, ग्रेविटी कितनी है? 10। अब उसकी हाइट कितनी होगी उस पॉइंट पे पहुंच के? दैट इज समथिंग दैट वी कैन फिगर आउट फ्रॉम दिस। ठीक है, सो हमें काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। दैट्स गोइंग टू बी समथिंग एक्स्ट्रा हियर। यू कैन डू इट इफ यू वांटेड, लेकिन वो जरूरत नहीं है वहां पर। बिल्कुल कर सकते हैं, स्पीड से भी कर सकते हैं फर्ज है, बट इट्स गोइंग टू बी लॉन्गर, क्योंकि आपकी एनर्जी कंजर्व हो रही है। यू कैन जस्ट डू इट डायरेक्टली लाइक दिस। ठीक है, ये आपके पास क्या आगे आ जाएगी हाइट? इट्स गोइंग टू बी 72 डिवाइडेड बाय 1.6 डिवाइडेड बाय 10 एंड दैट्स 4.5। सो दिस गिव्स मी 4.5 meters। ये आपकी हाइट होगी when it comes back and reaches its maximum height. Okay, all right. Let's move on to the next part. It says find the total time taken from the initial release of the ball until it reaches this greatest height. Now there are two parts of this journey. एक वो ऊपर से नीचे आ रहा है, उसके बाद नीचे से ऊपर जा रहा है. What's the acceleration in both cases? It's free fall, right? So acceleration आपके पास 10 होगी. हम दो parts में break कर लेते हैं इसको. हम पहले उसको A से B पे लेकर आते हैं. इस पे हमने कहा कि उसका डिस्टेंस 0.8 मीटर्स था. उसने किस पे स्टार्ट किया था? उसने स्टार्ट किया था रेस्ट से. रिलीज किया था ना, या रिलीज फ्रॉम रेस्ट. तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी 0. एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? वी आर टेकिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, क्योंकि नीचे मूवमेंट हो रही है. एक्सेलरेशन 10 हो जाएगी. व्हाट वी कैन डू इज वी कैन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द बॉटम. वेलोसिटी नहीं चाहिए, सिर्फ टाइम निकाल लें. आपको सिर्फ टाइम चाहिए. यहाँ पे टाइम निकाल लेते हैं. टाइम कैसे निकलेगा? we've got u, a and s, so we can use s equals ut plus half at square. That's something that's going to work here. S equals ut plus half at square. That's what I'm using. (0.8) equals 0t plus half into a, which is 10 into t square, and we can find the value of t from this. ये देख लें क्या आता है. 0.8 into 2 divided by 10, and then you take square root of that. That's 0.4 seconds. Okay, this is the time that you get for the particle to move from this point from A to B. A से B पे आने पे कितना टाइम लग रहा है इसको? इसको लग रहा है 0.4 seconds. Please confirm the calculation साथ साथ. 0.8 इसका ऊपर था. डिस्टेंस कितना था? Why am I taking 0.8 there? 0.8 मैंने कहाँ से लिया? 0.8 मैंने कहाँ से लिया? 0.8 मैंने यहाँ पे किधर से ले लिया? 0.8. Why did I take 0.8 there? I don't get it. I don't know what I was thinking. 0.8 मुझे यहाँ पे नजर भी नहीं आ रहा कि कहाँ से आए. Where is this coming from? It's nowhere, literally nowhere. 0.8, 0.8, 0.8 कहीं तो मिल जाए. No, I have no idea why I've written 0.8 there. The distance was actually supposed to be 5. जो हमने यहाँ पे लिखा था. This is 5 meters, so it's traveling 5 meters. This should have been 5 here, right? So this turns out to be 5. And let's calculate this again. 10 over 10, that's t square equals 1 and t equals 1.
टी की वैल्यू आपको यहाँ पे 1 आ रही है. दिस इज द टाइम टेकन फॉर इट टू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ठीक है, ये ऊपर से नीचे आने के लिए आपका हो गया. नाउ व्हाट हैपेंस ऑन द रिटर्न जर्नी. अब वो क्या कर रहा है, पार्टिकल ग्राउंड से ऊपर जा रहा है एंड इट रीचेस सम मैक्सिमम हाइट. अब बी पॉइंट से ऊपर को जा रहा है. ठीक है, now since it's movement in the upwards direction, I'm taking upwards positive now. Distance traveled कितना है इसके लिए हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया 4.5 meters. That's the distance traveled for the second part. What else do we know? Maximum point पे जाके velocity कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी highest point के ऊपर. ये दो चीजें आ गई. Acceleration आपकी यहाँ पे क्या होगी? If you are taking upwards direction as positive, the downward, since acceleration is acting downwards, A is going to be negative then. ये तीन चीजें आ गई. What you can do now is you can find the time taken from this. आपको initial velocity की जरूरत नहीं है. I was thinking maybe you might need to calculate that, but you don't have to. ये दो तीन चीजें हैं, आप यहाँ से टाइम निकाल सकते हो. कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? We don't really have an equation. फॉर्मूला शीट में नहीं दी होती. अगर आपको वो याद है आप वो यूज कर सकते हो. S equals VT minus half AT square. You could use this, right? You could use this if you wanted. If you don't remember this, so basically UT plus half AT square वाली equation होती है ना, उसकी वेरिएशन है. U की जगह आप V डालना चाहो, ये साइन चेंज हो जाता है. इसकी डेरिवेशन हमने क्लास में की थी किसी टाइम के ऊपर. You might have forgotten by now. ये फॉर्मूला शीट में नहीं दी होती. If you want, you can use this. Otherwise, आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको पहले इनिशियल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी. ओके, आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी. तो वो कैसे निकालेंगे? वी कैन यूज 2as equals v square minus u square. वो भी 2 स्टेप हो जाएंगे. 2 into minus 10 into 4.5 equals 0 square minus u square. u square आपने फाइंड कर लेना है यहाँ से. ठीक है, दिस इज वन वे टू डू इट. आप ये भी कर सकते थे, काइनेटिक एनर्जी को यूज करके भी निकाल सकते थे. व्हाई? बिकॉज आपको पता है कि बॉटम पे जाके उसकी काइनेटिक एनर्जी जब ऊपर मूव करना शुरू किया था, ये काइनेटिक एनर्जी थी, उससे भी आपके पास स्पीड आ सकती थी इनिशियल. इफ यू वांट यू कैन आल्सो डू दैट, बट लेट्स डू इट दिस वे. यहाँ पे हमारे पास u की वैल्यू क्या आ जाती है, इसको क्या इवैल्यूएट कर लें. 2 into 10 into 4.5 and then square root of that, that's square root of 90. u हमारे पास आ गया square root of 90. Initial velocity आ गई. And now we can find the time taken. Time taken आप कैसे निकाल सकते हैं? v equals u plus at यूज कर लें. That's the simplest one to use now. v is 0. u is square root of 90. a is minus 10 and time is square root of 90. Sorry, time is unknown. आपको फाइंड करना है. यहाँ से बस टाइम आ जाएगा. ये देखने क्या आता है. It's going to be square root of 90 divided by 10, and that turns out to be 0.9486. ये आपके पास upwards journey का टाइम है. You got the two times. अब आप क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे. You'll get the total time. So the total time taken is equal to 1 plus 0.9486, and that is 1.9486. अब इसको पूरा लिख सकते हैं if you want, or if you run it off, it becomes 1.95 seconds. ठीक है? That's the time that you've got. Adil, no, we're not considering that negative. So it basically depends on your positive direction. For this second part, for B to C, I've taken upwards as positive. So ये आपने define करना है अपने लिए. So generally what we do is, if it's a single direction motion, जो आप consider कर रहे हो एक time के ऊपर, for example यहाँ पे B से C देख रहा हूँ, it's a single direction for me at this point. तो जो जिस direction में आपकी movement है, आप उसको पॉजिटिव ले लेते हो, तो आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है. इट्स मोर इंट्यूटिव. बट इफ यू वांट यू कुड आल्सो डू इट द अदर वे अराउंड. दैट्स आल्सो फाइन. मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया. ठीक है, अगर मैं ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूँ, उस केस में सिंस द मूवमेंट इज अपवर्ड्स,
displacement is going to be positive, okay? But एक्सेलरेशन क्योंकि ग्रेविटी क्योंकि डाउनवर्ड्स होती है, अगर मैंने ऊपर पॉजिटिव लिया है, ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो मैं यहाँ पे लूंगा वो -10 लूंगा। अगर आप उल्टा करते, अगर आप नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव लेते, फिर क्या होता? फिर आपकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाती, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाती, लेकिन फिर आपकी जो वेलोसिटी होती है इनिशियल, वो भी फिर आपकी नेगेटिव होती, क्योंकि आपकी मूवमेंट अपवर्ड्स है और आपने नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ली है। And that's going to be a bit more confusing. You could do that if you wanted, but I would recommend just direction move कर रहे हो वो direction positive लें. It's going to be more intuitive. Okay. All right. Let's move on. Yes, Fazan, that's correct. If you want to be more accurate than that, that's okay. But this is the minimum level of accuracy that's required. इससे ज़्यादा आप कर सकते हो, that's fine. Okay. Yeah, but what about the 10,000? Why doesn't that count? Why does only the 1,000th count? It could go on and on. All right. Anyway, let's move on to the next one now. Question number 4 is relatively easier. 5 is relatively easier. Yeah. Let's do 6 now. That's the last question that we're going to be doing from this paper. Question number 6, and then we move to statistics after that. वो थोड़ा सा जल्दी होएगा. So should not worry कि बहुत ज़्यादा late हो जाएगा. Stats वाला paper में इतना time नहीं लगता, so we'll be quicker about that. Let's do this one first, and then we end with this paper. The diagram shows a particle of mass 5 kilograms on a rough horizontal table and 2 light and extensible strings. You can see the figure. So the table is rough. Let's highlight that. It's a rough table. And it's passing over smooth pulleys. The strings are passing over smooth pulleys at the edges of the table. You can see that in the figure as well. Particles of masses 4 kilograms and 6 kilograms hang freely. Particle of mass 6 kilograms is 0.5 meters above the ground. The system is in limiting equilibrium. बाकी सब चीजें आपको figure पे नजर आ रही हैं. एक तो ये table rough है. That's the important thing to note here. And the system is in limiting equilibrium. Now, what does that tell you? Limiting equilibrium जब भी लिखा होता है, the first thing you do is you write down friction की value क्या होगी? Friction is going to be equal to mu r. ठीक है? So you'll have to use that somewhere. Friction is equal to mu times r. Acha. Now, first of all, we have to show that the coefficient of friction between the 5 kg particle and the table is 0.4. तो basically हम इस particle को देखना चाह रहे हैं पहले. अच्छा, इस पार्टिकल के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है, हमें रिएक्शन भी देखना है. लेट्स थिंक अबाउट दिस पार्टिकल एंड mark all the forces that are applying on this. We've got weight of the particle that's acting downwards, 50 Newton. We also have reaction. Reaction इसके equal होगा, वो भी 50 हो जाएगा. Now, these are two separate strings. Right वाली string आपकी अलग है, left वाली string अलग है. Tensions are going to be different for these two strings. Left side पे different tension होगी, right side पे different tension होगी. Let's call this T1. ये left पे लग रही है. Let's call this T2. ये right पे लग रही है. ये आपकी forces होगी. What else do we have? The particle is in limiting equilibrium. The whole system is in limiting equilibrium. The whole system is in limiting equilibrium. अब इसका क्या मतलब है? आपको देखना है कि फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रही है, किस साइड में मूव करने लगा, किस साइड में मूव करने लगा है सिस्टम. राइट साइड पे देखें वेट ज्यादा है, लेफ्ट साइड पे वेट कम है, तो इट शुड बी अबाउट टू मूव टुवर्ड्स द राइट. राइट साइड मूव करने लगा होगा सिस्टम, क्योंकि राइट पे वेट ज्यादा है, लेफ्ट पे कम है. सो इट शुड बी अबाउट टू मूव टुवर्ड्स द राइट साइड. इफ इट्स अबाउट टू मूव टुवर्ड्स द राइट साइड, व्हाट अबाउट द फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज गोइंग टू अपोज दैट एंड एक्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. फ्रिक्शन आपकी इस डायरेक्शन के अंदर लग रही होगी. ठीक है, so we've marked the friction there as well. And now we have to find the coefficient of friction. अच्छा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं. 5 kg वाले पार्टिकल के लिए we know r की वैल्यू क्या है. r की वैल्यू तो 50 है. ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया वर्टिकल फोर्सेस है. So we got some vertical forces. Vertical force हमारे पास यही दो थी, उनको हमने इक्वेट कर दिया, r equals 50. What about horizontal forces? हॉरिजॉन्टल हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेस आ रही हैं? We've got
T1 acting on the left side, F acting on the left side, and T2 acting on the right side. They should be equal. Now, what about T1 and T2? For that, you have to consider the other particles. Left side वाला particle 4 kilograms का, इस पे downwards कितनी force लग रही है? 40 Newton. Upwards tension होगी, उसकी value भी कितनी हो जाएगी? 40. So T1 की value असल में 40 है. You can input that here. Similarly, 6 kg particle right side पे, उसका weight कितना है? 60 Newton. तो उस पे ऊपर टेंशन लग रही है क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम के अंदर है. डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द अपवर्ड फोर्स. T2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 60 हो जाएगी. सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 60. और दरमियान में फ्रिक्शन की जगह आप क्या कर सकते हो? यू कैन से म्यू इनटू आर, राइट? व्हाई? बिकॉज़ वी आर इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम. एफ की जगह पे म्यू आर लिख दिया. And now you can solve this. 40 plus mu into 50. We've got the value of r from here. And you find the value of mu. ठीक है, आप देखने क्या आता है? 20 over 50. That turns out to be 0.4. You had to prove this. ये आपने prove कर दिया. That's 0.4, right? So that was 2 mark. It's okay. It wasn't that long. How did you figure out tension? Tension देखें. Right side पे force इस ये particle है. So इस particle के ऊपर क्या लग रही है? Downward force weight है 60. Upwards force T2 है. Now, since this particle is in equilibrium, T2 should equal 60. Weight और tension equal होना चाहिए इस particle के लिए. Similarly, for the particle on the left side, इसका weight है 40 Newton जो नीचे लग रहा है. Since it's in equilibrium, जो ऊपर वाली tension है वो उसका equal होगी. That's also 40. Okay? अब ये वाली tension equal है क्योंकि इस पुली के ऊपर से गुजर रहे हैं. Single string है, पुली के ऊपर से गुजर रहे हैं, पुली के ऊपर से जो भी strings आती है, दोनों sides पे आपकी tension हमेशा equal होती है. ठीक है? So that's the first part. Now it says the 6 kg particle is now removed. Now it's replaced by a particle of mass 8 kilograms. It's replaced by a particle of mass 8 kilograms. And the system is released from rest. Okay. अब इसमें जो ऊपर हमारी situation थी इसमें change आ गई है. 6 kg की जगह पे हमारे पास 8 kg वाला particle आ गया. Okay. And now the system is released from rest, so it will start moving. पहले वो about to move था, limiting equilibrium के अंदर था. अब 6 kg से आपने और weight बढ़ा दिया, तो अब ये नीचे की तरफ यहाँ पे move करना शुरू कर देगा. ठीक है, नीचे की तरफ move करना शुरू कर देगा. Second part के लिए you've got 8 kilograms here. ठीक है, अब movement शुरू होगी, अब equilibrium नहीं है. Keep that in mind. We have to find the acceleration of the 4 kg particle and the tensions in the strings when this happens. Okay. अब acceleration तो सब में same ही होगी ना, क्योंकि वो सारे string के साथ connected हैं. जो 4 kg particle वाले की tension है, की acceleration है, वही acceleration इसकी होगी, वही acceleration इसकी होगी, because the string is taut and they're connected by the string. सबकी acceleration same नहीं है, so basically पूरे system की acceleration find करनी है. Now, how do we think about this? There are 3 particles. हम क्या करते हैं? Individually हर एक के ऊपर Newton's second law लगा देते हैं, RF equals ma. Think about the forces that are applicable on each of them and apply Newton's second law on them. ठीक है? अच्छा, पहले particle 8 kg वाले particle को देख लेते हैं. इससे start करते हैं. 8 kg particle नीचे को move कर रहा है ना. What's the forward force? Weight of the particle, that's 60. What's the backward force? Tension. Tension की value 60 नहीं लेनी है. अब movement शुरू हो गया. They are not equilibrium. They're not in equilibrium. ठीक है? तो T2 जो भी है हमें नहीं पता क्या है. कहेंगे 60 minus T2 that equals. Sorry, 60 भी नहीं है. It should have been 80. इसमें एक्चुअली बेहतर है अगर आप अलग से फिगर बना दें, अदरवाइज कंफ्यूजन होगी. इस समय यहाँ पे हुई 8 kilograms उसका मास था ना, तो वेट भी आपका चेंज हो जाएगा ना. it would be 80 now, not 60. So वेट यहाँ पे 80 होना चाहिए. It often helps to draw another figure, or you should do all the annotation using a pencil. अब second part के लिए you can just erase everything from the first part और उसको दोबारा से mark कर लें. That's also better. Okay.
Now I'm going to actually remove that what I marked for the previous parts ताकि confusion नहीं हो. Yeah, everything else is fine. Weight is now 80 Newton. नीचे को अब 80 Newton लगेगा. ठीक है, तो मैंने क्या किया, 80 minus T2 that equals 8 into acceleration. एक ये हमारे पास इक्वेशन आ गई. ठीक है, अच्छा 4 kg पार्टिकल को देख लें जो लेफ्ट साइड के ऊपर है. व्हाट अबाउट दैट? ये किस तरफ को मूव कर रहा है? इट्स मूविंग अपवर्ड्स. व्हाट्स द फॉरवर्ड फोर्स फॉर दिस? फॉरवर्ड फोर्स फॉर दिस इज T1. ठीक है, T1 में से हमने सबट्रैक्ट कर दी बैकवर्ड फोर्स, दैट्स द डाउनवर्ड फोर्स, दैट इज 40. सो T1 minus 40, that should equal mass of this particle, that's 4 into acceleration. ये एक और equation आ गई. Now we've got 2 equations and 3 unknowns. We can't really solve them. एक T2 है, एक T1 है, एक acceleration है. 2 equations से 3 unknowns से नहीं find कर सकते हम. So we have to make another equation. एक और क्या कर सकते हैं हम? Let's consider this middle particle now. उस पे न्यूटन सेकंड लॉ लगा दें, उस पे भी आप वही अप्लाई कर दें. That's the 5 kg particle. Let's consider that. Now, which side are we moving in now? Which direction are we moving in? We're moving in the right direction. So the forward force here is T2. Backward force or backward forces are friction and T1. Friction and T1, ये backwards लग रहे हैं. And they equal mass of this particle 5 into acceleration. That's the information that we have. We have these 3 equations. Now, F friction जो है अब आप कैसे निकाल सकते हो? पार्टिकल्स मोशन के अंदर है, जब मूव कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट्स, तब भी आपका फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर होती है, म्यू आर के इक्वल होती है. सो यू कैन इनपुट म्यू आर हियर 0.4 इनटू रिएक्शन इनटू आर. आर की वैल्यू यहाँ पे अभी भी 50 है, राइट, बिकॉज वर्टिकल फोर्सेस तो आपके पास वही 2 हैं. आर 50 इनपुट कर दें. Minus T1 equals 5 times A. That's another equation that we have. We have T2 minus T1 that equals 50 into 0.4 is 20. 20 goes to the other side. इसको यहीं पे रख लें बेशक. T2 minus T1 minus 20 equals 5 times acceleration. अब इनको सॉल्व करना है आपने साइमल्टेनियसली. चाहिए कि आपको एक्सेलरेशन चाहिए. ठीक है. Now, what you can do is you can find T1 and T2 in terms of A from the first 2 equations and then put them in the third equation. That's one way to do it. A very quick way of this is actually just to add all of these equations. तीनों के equations को अगर आप add कर देना, उससे होगा क्या? ये minus T2 है, ये plus T2 है, ये cancel हो जाएंगे. ये plus T1 है, ये minus T1 है, ये cancel हो जाएंगे. आपको सिर्फ A रह जाएगा. That's very quick, but you might not be able to figure it out at that point. So हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड तरीका क्या होएगा, हम T2 फाइंड कर लें यहाँ से. That's going to be 80 minus 8A. Okay. T1 फाइंड कर लें, that's 40 plus 4A. Put both of them in that third equation now, क्योंकि आपको A चाहिए ना. T1 T2 वहां से एलिमिनेट कर दें, ये दोनों चीजें इनपुट कर दें उसके अंदर. T2 की जगह we've got 80 minus 8A. T1 is 40 plus 4A minus 20 equals 5 times A. Solve this equation, you get A from this. 80 minus 8A minus 40 minus 4A minus 20 equals 5A. What does that give us? 12 and 5, that's 17A on the right side. Left पे क्या आता है? 80 minus 40 minus 20, that is 20. Acceleration equals 20 over 17. That is 1.176. Or you can say 1.18. That's your acceleration. ठीक है? Any problems with this? That's the acceleration that we were looking for. तीनों उसी acceleration में move कर रहे हैं. So this is the final result. Okay, let's move on.
Next, it says, in the subsequent motion, the 8 kg particle hits the ground and does not rebound. Find the time that elapses before the 8 kg particle hits the ground, before the other two particles come to instantaneous rest. Okay. अच्छा, हम क्या करते हैं? I'm just going to copy that figure here again. That's going to make things a bit simpler for us. Just give me a second. It looks like that, Farzan, that both will come to rest at the same time. Yeah, of course, because they're connected, right? Both the strings are connected. Okay, let's look at the figure and then think about that. Figure देखते हैं एक दफा. क्या सोचते हैं? Okay, so this is the figure that we have. Now remember 6 kg वाला particle replace हो गया था 8 kg के साथ. Keep that in mind. We don't have this anymore. We've got an 8 kg particle here. Okay. Now the 8 kg particle hits the ground and does not rebound. अब इस part में acceleration तो हमारे पास है अभी. Acceleration क्या है? 1.18. उसकी exact value मैं एक बार दोबारा से लिख लें. यहाँ पे क्या थी? 20/17. Because जब हम आगे use करेंगे कोई चीज, इसकी हमें ज्यादा accurate value use करनी चाहिए. I'm going to write that here. A was actually 1.1765. Okay, ये value हम आगे use करेंगे. Fazan, let's think about it. Just give me a moment. अच्छा, 8 kg particle hits the ground and does not rebound. Okay. अब क्या हो रहा है? ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, 8 kg पार्टिकल नीचे आ रहा है. कितना मूव करना है इसने? 0.5 मीटर्स. ठीक है, 0.5 मीटर्स मूव करना है. उसने क्या? फाइंड द टाइम दैट elapses आफ्टर द 8 kg पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड and before the other two particles come to instantaneous rest. अच्छा देखिए, 8 kg पार्टिकल जब ग्राउंड पे आके हिट करेगा तो क्या होगा? There's going to be no tension in this string anymore because यहाँ पे this string will become slack, right? So there's going to be no tension in this part. ये tension खत्म हो जाएगी. You'll only have the other two particles, and they are connected by a string. वो right side में move करते जाएंगे. ठीक है? And at some point, they are going to come to rest. Why? Because there's friction between the 5 kg particle and the surface, and there's also this weight of the 4 kg particle that's going to resist the motion. तो किसी point पे जाके they're going to come to instantaneous rest, और फिर वो वापस मूव करना शुरू कर देंगे नीचे वाली साइड के ऊपर, लेफ्ट वाली साइड के ऊपर. बट वी डोंट केयर अबाउट दैट. हमें सिर्फ उस पॉइंट तक चाहिए जहां पे वो रेस्ट पे आते हैं और वापस मूव करना शुरू कर देते हैं. ठीक है? नाउ लेट्स एक्चुअली डू दिस. इट शुड नॉट बी दैट लॉन्ग. लेट्स स्टार्ट इट. ठीक है? It's again, if you're comparing with the other paper, with the other variant, it doesn't look that difficult. Okay? अच्छा, let's do it step by step. सबसे पहले हमें क्या करना है? टाइम फाइंड करना है ना. उसके बाद से तो हम क्या करते हैं? पहले जो करंट पोजीशन है उसको यूज करके, सिंस वी नो के इनिशियल वेलोसिटी 0 थी एंड वी नो एक्सेलरेशन वाज 1.1765 and we know the distance traveled until the 8 kg particle hits the ground. तो इस पॉइंट तक आप क्या कर सकते हो? वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो, फाइनल वेलोसिटी इन पार्टिकल्स की. कि जब वो हिट करेगा 8 kg पार्टिकल ग्राउंड को, तब आपकी वेलोसिटी कितनी होगी. ठीक है? So we're looking for the velocity when 8 kg particle hits the ground. Right? That's what we're looking for. कैसे आएगी?
V equals U plus A and S. No, that's going to work. That's not going to work. 2AS use कर लेते हैं. 2AS equals V square minus U square. We know the acceleration. That's 1.1765. We know the distance traveled. That's 0.5. We know the initial velocity that started from rest. यहाँ से क्या होगा, हमारे पास वो velocity आ गई जिस point पे उन्होंने ग्राउंड को हिट किया. ठीक है, हमें टाइम नहीं चाहिए फर्जन. टाइम उसने पूछा है 8 kg पार्टिकल हिट करने के बाद टाइम शुरू होगा, तो हमें पहले वाला टाइम नहीं चाहिए, हमें उसके बाद वाला टाइम चाहिए. वी डोंट नीड दैट. ओके, वालेकुम अस्सलाम इब्राहिम. हमें पहले वाली से वेलोसिटी चाहिए. सो लेट्स फिगर दिस आउट. ये क्या आता है, 2 into 0.5 into 1.1765, and that is square root of that turns out to be 1.0847. This is the velocity of all the particles at the time the 8 kg particle hits the ground. ये आपके पास उस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी आ गई. ठीक है, उस पॉइंट पे वेलोसिटी आ गई जब 8 kg पार्टिकल ग्राउंड को हिट करता है. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस? What happens after this? This string is going to become slack. ये खत्म हो गई. So now the acceleration is going to be different. अब acceleration कैसे figure out करें? We have this 5 kg particle. इसके ऊपर कौन कौन सी forces लग रही हैं? एक downward force है, that's 50 Newton. एक upward force थी, that was reaction. Forward force, there's no forward force anymore. Backward force, there is this tension. This tension का हमने T1 कहा था पहले, let's call this T1 again. And there's going to be friction, right? लेकिन friction किस direction में होगी? Friction किस direction में होगी? Movement तो right पे हो रही थी ना? Movement right पे हो रही थी. Friction is still going to be towards the left side. So we've got friction to the left side as well. ये हमारे पास particle 5 kg वाले particle पे movement आ गई. ठीक है, good. What about the other particle? इस पे tension लग रही है. That's acting upwards. Weight लग रहा है. That's acting downwards. So again, you have to use the Newton's second law, RF equals ma, on both the particles one by one to figure out the current, the acceleration after the 5 kg particle hits the ground. ठीक है? So once the 5 kg particle has hit the ground, उसके बाद क्या है हमारे पास, हम दोनों देखते हैं. एक 4 kg वाला particle था, उसके ऊपर लगा देते हैं, और 5 kg वाले के ऊपर लगा देते हैं. We apply resultant force equals mass into acceleration in both of them separately. 4 kg वाले के ऊपर 40 is the forward force, T1 is the backward force. So we said 40 minus T1 equals 4 into A. For the other particle, the forward force, there's no forward force. The backward forces are T1 and F. So we say 0 minus T1 minus F. That equals 5 into A. Again, friction equals mu r. Mu की value is 0.40. Reaction is, I think, still reaction is still 50. You can see that. That equals 5 into A. दो equations आ गई. Minus T1 minus 50 minus 20 equals 5A. We have to find acceleration. दोनों को add करेंगे तो नहीं आएगा. We can subtract both of them, or let's just find T1 from one of them and put in the other. First वाले से T1 find कर लेते हैं. This is going to be 40 minus 4A. Let's go and input that in the other equation. That gives us minus into 40 minus 4A minus 20 equals 5A. Okay, now that is minus 40 plus 4 times A minus 20 equals 5 times A, and that is A equal to minus 60. Is that correct? Getting minus 60 here. Can you check the calculation again? Minus 60 बहुत ज़्यादा है. 0 minus T1 minus
ये फॉरवर्ड फोर्स थी, इसमें से हमने माइनस कर दिया T1 and F. That's fine. Yes, the equations are okay. 40 minus 4a वहां पे जाके इनपुट किया, 40 minus 40 plus 4a, and then minus 20 there, and 5a. Is there any error in the calculation? Okay. Yeah, so so this was actually wrong here. Direction of movement upwards थी ना यहाँ पे, direction was here, direction upwards here. Yeah, it seems a lot. The reason is actually we did a mistake here. Direction क्योंकि direction of movement क्या थी? It was in this direction for particle, for the 5 kg particle. तो ये जो 4 kg वाला particle that was actually moving upwards. वो ऊपर को move कर रहा था ना. अब ऊपर को move कर रहा है तो forward force इसकी T1 होनी चाहिए थी. हमने उल्टा कर दिया वहाँ पे. This should have been the other way around. It should have been T1 minus 40. Forward was T1, backward was 40. So T1 यहाँ पे हमारे पास आता है 4a plus 40. So when we input 4a plus 40 there, that gives us 4a plus 40. That's minus 4a minus 40 minus 20. And that's 9a equals minus 60. That's more reasonable. A equals minus 60 over 9. That's the acceleration that we have. That's the acceleration after the particle, the 8 kg particle has hit the ground. उसके बाद ये situation. ठीक है? अब इस point के ऊपर हम क्या करेंगे? हम दोबारा से constant acceleration वाले formula लगाएंगे. So after a kg particle hits ground, ये नीचे वाली working इस केस के बाद है. When it hits the ground, उसके बाद क्या हो रहा है? हमने acceleration find कर लिया. What else do we know? Initial velocity क्या है? ये जो पहले final velocity थी, अब initial velocity वो हो जाएगी. That's 1.0847. 1.0847. And what are we looking for? जब वो rest पे आते हैं. Rest पे कब आते हैं? Rest पे आते हैं जब velocity 0 हो जाती है. Find क्या करना है हमें? Find करना है हमें time taken. So we can use A, U, V. Time कैसे आएगा? V equals U plus AT. And that gives us 0 equals 1.0847 plus minus 60 over 9 into T. And that's going to give us some value. Minus 1.0847. उधर चला जाएगा, तो वो 9 से multiply हो जाएगा. और minus 60 से divide होगा. Evaluate this and we get our time. 1.0847 into 9 divided by 60. That gives me 0.1627, which is 0.163. अगर आपने round off करना भी हो ना end पे 3 significant figures तक, it's better to write all decimals first. उसके बाद round off कर दें. उसका फायदा ये होता है अगर आपसे rounding off में गलती भी हो जाए, you can still sometimes get marks क्योंकि वो यहाँ पे आंसर देख के बाकी आगे को इग्नोर कर देगा, and you still get marks अगर आपको rounding off error भी आ जाए. So write more significant figures first, and then if you want, you can round it off 3 significant figures as well. So that's the time taken, and this part was again quite long for 5 marks. I agree to that. So yeah, so there was something wrong with this session. Maybe they hadn't checked thoroughly कि इनको करके कितना टाइम लग रहा है, but yeah, so that's how it is. Okay, so that was question number 6. यही टाइम चाहिए था, खत्म हो गया. ये हमें टाइम ही चाहिए था, और तो कुछ नहीं चाहिए था. We only needed the time after the 8 kg particle hit the ground and before the other 2 particles come to instantaneous rest. दोनों इकट्ठे रेस्ट पे आएंगे ना, दोनों इकट्ठे रेस्ट पे आएंगे. They're connected by a string. They're connected by a string. They're connected by the string, and the string is taut.
they're going to come to rest at the same point. दोनों decelerate कर रहे हैं ना, दोनों decelerate कर रहे हैं इस के ऊपर, they're going to come to rest at the same time. I understand where you're coming from कि अच्छा आपको लग रहा है कि 5 kg पार्टिकल जब रेस्ट पे आएगा तो 4 kg पार्टिकल की कोई स्पीड होगी जिसकी वजह से वो थोड़ा सा और ऊपर मूव करेगा, स्ट्रिंग स्लैग कर जाएगी. But that's not happening here, क्योंकि दोनों की स्पीड्स सेम एक्सेलरेशन पे, सेम डिसेलरेशन पे कम होती जा रही है. दोनों की सेम डिसेलरेशन है ना, -60/9. दोनों डिसेलरेट कर रहे हैं, तो एक ही पॉइंट पे दोनों की वेलोसिटी 0 हो जाएगी. राइट, एक ही पॉइंट पे दोनों की वेलोसिटी 0 हो जाएगी. बोथ गोइंग टू कम टू रेस्ट इंस्टेंटेनियसली. और उस पॉइंट के बाद क्या होगा, उस पॉइंट के बाद आपका ये पार्टिकल 4 kg वाला नीचे मूव करना शुरू कर देगा और ये 5 kg वाला लेफ्ट मूव करना शुरू कर देगा. बट वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट. इन दिस केस हमें सिर्फ ये टाइम चाहिए था, हमने निकाल लिया. ऑलराइट, so that ends this paper in terms of the questions that we had to cover.